अभी हम लोगों ने पिछली उसमें वीडियो में हम लोगों ने की थी प्रैक्टिस। अब हम लेंगे 75 एक्सरसाइज की वो डिक्टेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करें ताकि आप लोग इस प्रैक्टिस आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें अपनी साथ में ही। और डिक्टेशन की प्रैक्टिस करने के लिए मैं खुद तो बोल नहीं सकता उस टाइम, तो इसलिए मैं एक बार यूट्यूब की सहायता लेता हूँ ताकि डिक्टेशन की प्रैक्टिस साथ ही साथ होती रहे, इसलिए यूट्यूब से ही लेनी पड़ती है डिक्टेशन। तो अभी हम लोग लेंगे 80 WPM पे 80 WPM पे लेंगे 75 की डिक्टेशन, 75 एक्सरसाइज की, जो कि स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। 3 2 एक बार मैं देख लेता हूँ ताकि और डिस्टर्बेंस ना हो। और बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ है मेरी आज, क्योंकि थोड़ी कमरा मेरा थोड़ा आवाज़ वाला है, उसके पास रोड है, इसके कारण आप लोगों को बहुत आवाज़ आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड से, लेकिन बीच बीच में बंद भी होती रहेगी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अभी अपन करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट। एक मैम है, हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब से लेते हैं डिक्टेशन ताकि एक बार इजीली हम लोग लिख सकें, और उसको आगे ट्रांसक्राइब करते हैं जिससे थोड़ा आसान हो जाता है, वरना खुद से तो डिक्टेशन लेनी पॉसिबल नहीं है। ओके स्टार्ट। This is exercise number 75 of the legal dictation on the speed of 80 words per minute for 10 minutes. Start. According to the prosecution, 7 assailants came in a Maruti van and assaulted a college professor and chopped off his right palm when he was returning home. The alleged motive for attacking the professor was that he incorporated a question for the internal examination of BCom paper criticizing Prophet Muhammad and Islam. Respondent is a dental surgeon. The prosecution case is that the respondent gave medical aid to one of the wounded accused in pursuance of a previous plan that if and when any of the assailants got injured in the attack on the professor, then immediate medical treatment would be given by the respondent to the injured, and that the respondent stitched the back of an assailant, which is not the job of a dentist. It was further alleged that the respondent was a member of the Popular Front of India, a Muslim organization, and was head of its medical committee. The prosecution placed reliance on the proviso to Section 43D(5) of the Unlawful Activities Prevention Act 1967, which states that the accused shall not be released on bail if the court, on perusal of the case, diary, or the report under Section 173 CRPC is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. The instant appeal is filed against the order of High Court granting bail to the respondent. Dismissing the appeal,
the court held. In the instant case, this court is only considering the bail matter and not deciding whether the respondent is guilty or not. Evidence has yet to be led and the trial yet to commence. Hence, the prosecution is yet to establish by proof beyond reasonable doubt that the respondent was part of a conspiracy which led to the attack on the professor. The case against the respondent is very different from that against the alleged assailants. There is no allegation that the respondent was one of the assailants. There is no prima facie proof that the respondent was involved in the crime. Hence, the proviso to section 43D5 of the Unlawful Activities Prevention Act 1967 has not been violated. The respondent, being a doctor, was under the Hippocratic oath to attempt to heal a patient, just as it is the duty of a lawyer to defend an accused, so also it is the duty of a doctor to heal. Even a dentist can apply stitches in an emergency. Prima facie, the only offense that can be leveled against the respondent is that under section 202 IPC, that is, of omitting to give information of the crime to the police, and this offense has also to be proved beyond reasonable doubt. Section 202 is a bailable offense. As regards the allegation that the respondent belongs to the Popular Front of India, there is no evidence as yet to prove that the PFI is a terrorist organization, and hence the respondent cannot be penalized merely for belonging to the PFI. Moreover, even assuming that the PFI is an illegal organization, this court is yet to consider whether all members of the organization can be automatically held to be guilty. In deciding bail applications, an important factor which should certainly be taken into consideration by the court is the delay in concluding the trial. Often the trial takes several years, and if the accused is denied bail but is ultimately acquitted, Article 21 of the Constitution, which is the most basic of all the fundamental rights in our Constitution, would be violated. Of course, this is not the only factor, but it is certainly one of the important factors in deciding whether to grant bail. In the present case, the respondent has already spent
66 days in custody, and there is no reason why he should be denied bail. The appellant has filed his appeal challenging the impugned order of the Kerala High Court dated 17th September 2010, granting bail to the respondent, Dr. Raneek, who is a medical practitioner dentist in Ernakulam district in Kerala and is accused in crime number 704 of 2010 of the police station Muwatupuza for offences under various provisions of the IPC, the Explosive Substances Act, and the Unlawful Activities Prevention Act. The facts of the case are that on 4/7/2010, soon after 8 am, 7 assailants came in a Maruti van and assaulted Professor T.J. Jacob of Newman College and chopped off his right palm from the vicinity of his house when he was returning home after Sunday Mass. The role attributed to the respondent is that he treated injured assailants. देखो भाई, सिंपल सी बात है इसमें। मेरे भी कुछ वर्ड छूटे हैं, क्योंकि मेरे ना ज़्यादा नहीं छूटे हैं वैसे तो। कुछ वर्ड छूटे हैं क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैंने खुद में भी अभी थोड़ा बिजी चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ी सी भी अगर इसमें प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो स्टेनो में यही है कि आपकी थोड़ी स्पीड गिर जाती है। तो थोड़ा, इतने भी नहीं छूटे, स्ट्रोक भी अच्छे आए हैं, बट और ऐसे भी आया कि इजीली मैं पढ़ सकता हूँ। बट क्या नाम है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस छूटने के कारण हल्का सा मेरी हल्की सी स्पीड गिर चुकी है, जिसको कुछ नहीं, मैं अभी 2-3 बार इसको लिख लूँगा ना, अगर इसकी प्रैक्टिस कर लूँगा तो ये वापस कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है, इस स्पीड पे अपने को वहाँ डिक्टेशन देनी है हाई कोर्ट वगैरह में, और बाकी जितने भी 80 WPM पे अपने पेपर होते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अब इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, वो भी हमको करना चाहिए, जिससे हम लोगों की और एक्यूरेसी बढ़े। तो आप लोग भी अगर स्टेनो करते हैं और ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, उसको आप ऐसे ही लिख के फिर आप सोचते हैं कि हाँ मैंने इतनी कम छोड़े होंगे या ऐसे किए होंगे, छोड़ देते होंगे, ऐसा मत करना। उसको ट्रांसक्राइब करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉन्फिडेंस के लिए भी और एक वैसे भी। तो अभी मैंने इसको कर लिया है, अब हम लोग करेंगे ट्रांसक्राइब। और ये थी डिक्टेशन की वीडियो, तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। इसके बाद मैं करूँगा 2-4 वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए, और अपने को इसको ट्रांसक्राइब करूँगा। और ऐसी और व्लॉग के लिए, ऐसी और लाइव के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव पे आ जाया करना, ज्वाइन कर लेना, और बता देना क्या क्या चाहिए आपको वीडियोस के अंदर। शुक्रिया।